scholars conducting their research work. Before joining IGNOU, he is a faculty and dean, School of Education at B.B. Ambedkar University, Lucknow, Central University of Himachal Pradesh, Dharamshala, and Mahatma Gandhi International Hindi University, Wardha. He has held the positions of Director, Distance Education and Dean, Academics and Dean Planning at MGAHV Wardha. He has been a Fulbright Nehru International Education Administrator Fellowship Awardee for the year 2016 and 17 and Inspired Teacher Awardee by President of India to participate in residence program at Rashtrapati Bhavan, New Delhi 2015. He is credited with widely acclaimed book entitled Nyaya Philosophy, Epistemology and Education, Constructivist Epistemology and Pedagogy, Insight into Teaching, Learning and Knowing. He is also credited with 4 other publications with international publisher Pearson, Measurement and Assessment in Education, Research in Education, Qualitative Research for Education and Fundamentals of Educational Psychology. He acted as a resource person for NCERT New Delhi, SCERT Gurgaon, Haryana, Institute of Public Administration, Gurgaon, Academic Staff College, Jamia Millia Islamia, New Delhi, Academic Staff College, HP University, Shimla, ASC at DAVV, Indore, and many more. He is a prolific contributor to philosophical and educational studies and research. His area of interest and specializations are educational problems and practices in general in epistemology, pedagogy, and constructivist pedagogy, philosophy of mathematics, science, and research in particular. On behalf of Sri Vaishnava Vidyapita Vishwavidyalaya, we welcome you, sir. Now, I invite you for your deliberation. Sir, please. Right. Thank you. I've given very brief intro about you, although That's enough. In such kind of activity, what is important is what a speaker speaks and how do the participants respond to that in a very, very dialogical way. That matters the most. But anyway, I'm nothing against to this. Thank you so much. And I'm sorry that I started, without seeking permission from you. But anyway, so now I'm coming to the point. So the culture, culture, as I always say, like mathematics or sciences, particularly the hard sciences, not the soft sciences. In hard sciences and under the category of hard science, only one science qualifies, and that is a physics. Rest of the sciences, they come under the soft sciences. But anyway, so as we define things in the hard sciences and mathematics, right, that kind of definition doesn't apply in social sciences. And particularly when you talk in with reference to art, culture, aesthetics, etc., etc. But anyway, so if you'll ask me, how do I perceive culture? My cultural definition of culture will be completely different from the rest of the scholars who have devoted his or her life to understand what culture is all about. So, and there's nothing wrong with that, because in social science, there will always be a definition. There can never be the definition. And that's the fundamental distinction between the sciences and the social sciences. And culture, art and culture, which doesn't come either under the category of the science or under the category of social science. It comes under the category of humanities, right? So I'll definitely talk about that, the humans for humanity. Now, we all know that the culture plays an important role in the development of any nation. And it represents, as I said earlier, let me reproduce it, that it represents a set of shared attitudes, shared values, shared goals, and shared practices. So culture and creativity manifest themselves in almost all sorts of activities in a national life, whether it is economic activity, social activity, or any kind of educational activity or political activity, any kind of activity that you imagine
culture plays a very, very important role. Even culture plays very important role in business and economics as well. So a country as diverse as India is, symbolized by the plurality of its culture. So there is a culture. Under that culture, there are subsets of culture, and commonly which is known as the plurality. But apart from that pluralism, you'll find there is a culture which can be called as Indian culture. So India has one of the world's largest collections of songs, music, dances, theater, folk traditions, folklores, folk music, folk art, performing arts, rites and rituals. In terms of rites and rituals, presently, I think India can be considered the country which is a very, very complex. And we have the rituals, rites and rituals related to everything, and which we call in Indian tradition sanskaras. So paintings, writings, and they all are known as the intangible cultural heritage. Some people call it ICH of humanity. So anything and everything that symbolizes the intangible cultural heritage of humanity, and in Indian context may be known as Indian culture. So in order to preserve all these elements, the Ministry of Culture implements a number of schemes and programs. Educational institutions do try to maintain the cultural traditions of the country, and there are other forms of institutions in India, excuse me, they also advocate, right, that how to preserve and maintain the culture. So the culture organizations engaged in performing visual and literary arts. Now, one quotation that I would love to share with you regarding the culture, and that is as Edgar Shishin says, that the culture consists of the shared beliefs, as I said in the beginning, he says values, but I say shared values. There are values, but only the shared values can form the part of the culture. And assumptions of a group of people who learn from one another and teach to others that their behaviors, attitudes, and perspectives are the right way to think, to act, and to feel. I repeat, friends, culture consists of shared beliefs, number one. It also consists of shared values, shared assumptions of a group of people who learn from one another and teach to others that their behaviors, attitudes, and perspectives are the correct ways to think, act, and feel. There are n number of definitions. No? So culture refers to the cumulative deposit of knowledge. It represents the cumulative deposit of experience. It represents the cumulative deposit of beliefs, cumulative deposit of values, attitudes, meanings, hierarchies, notions of time, roles, spatial relations, concept of the universe, and material objects and positions acquired by a group of people in the course of generations through individual and group striving. There are other definitions as well. For example, culture is a system of knowledge shared by a relatively large group of people. So, in short, you can say culture is a communication, or you can say communication is a culture. You ask those who work in this area, they advocate like this. For me, knowledge is a culture and culture is knowledge from the epistemic point of view, right? And from the axiological point of view, culture is nothing but the set of these shared values. Similarly, it has its ontic dimension as well. So culture, in its broadest sense, is a cultivated behavior. And that's why I find when you observe the people, when they travel, in comparison to Americans, Europeans, Africans, or Arabian people, when they travel,
when they eat, when they talk, when they dress up, or whatever, whatever. So that is the totality of person's learned, accumulated experiences, which is a socially transmitted, or more briefly, behavior through social learning. I claim you give me 50 people and just serve one plate of food in front of each people, and you don't tell me their name and from where they have come. I'll, with 70 to 80% accuracy, I'll be able to tell you that this person belongs to that particular state, or I belong to that particular state, or he belongs to that state or this state. Like when people speak out, right? You identify, oh, that person belongs to so and so state. So a culture is a way of life of a group of people. And when I'm saying way of life, under way of life comes behaviors, beliefs, values, and symbolic interactions, symbols that they accept generally without thinking about them, and that are passed along by communication and imitation from one generation to the next. So let me summarize. Culture consists of patterns, explicit and implicit both, of and for behavior acquired and transmitted by symbols constituting the distinctive achievement of human groups, including their embodiments in artifacts. The essential core of culture consists of what? They consist of traditional ideas and especially their attached values. So you can say that the culture systems may, on the one hand, be considered as products of actions. On the other hand, as conditioning influences upon further actions. So coming to the theory of cultural determinism, the position that the ideas, meanings, beliefs, and values people learn as members of society that determines human nature. So if you'll ask the scholar who work in the area of culture, they will say, no, your nature is a product of your culture. Like Vygotsky says, a human being is a product of his or her own social settings. So people are what they learn. So optimistic version of cultural determinism places no limits on the abilities of human beings to do or to be whatever they want. So some anthropologists suggest that there is no universal right way of being human. So right way is always our way. That our way in one society almost never corresponds to our way in other society. And that's why the cultural thinkers say that the culture is a culture. No culture is just inferior or superior, or no culture can be equated with any other culture. So proper attitude of an informed human being could only be that of, for example, India is a great example of being tolerant. And that's why the optimistic version of this theory postulates that human nature being infinitely malleable, human being can choose the ways of life they prefer. So, but it has, I mean, cultural determination has pessimistic version as well. So the pessimistic version maintains that people are what they are conditioned to be. And this is something over which they have no control. So how I will speak, what will be my pronunciation, how I will behave, at least in terms of my body language, I have no command over this because this is what my culture has taught me. So human beings are passive creatures and do whatever their culture tells them to do. So this explanation leads to, as you know, behaviorism psychologically, that locates the causes of human behavior in a realm that is totally beyond human culture. And then there are advocates, they advocated that no, there's nothing like cultural determination. There is everything like cultural relativism. So let me talk a little bit about this cultural relativism. Different cultural groups think, feel, and act
differently. So there is no scientific standards for considering one group as intrinsically superior or inferior to another, as I said earlier. So studying differences in culture among groups and societies presupposes a position of cultural relativism. So it does not imply normally for oneself nor for one society. It, however, calls for judgment when dealing with groups of societies different from one's own. Similarly, there is another kind of theory has emerged as far as the cultural study is concerned, and that is a cultural ethnocentrism. You all know what is ethnocentrism. Ethnocentrism is the belief that one's own culture is superior to that of other cultures. And it is a form of reductionism that reduces the other way of life to a distorted versions of one's own. And this is a particularly important in case of global dealings when suppose a company of an individual is imbued with the idea of the methods, materials, etc., etc. Okay, and then the question arises: how manifestations of culture take place? If culture are different, culture is unique, but how its manifestation take place? So cultural differences manifest themselves in a different way and different levels of depth. So symbols represent the most superficial and values the deepest manifestations of culture, with heroes and rituals in between. So symbols, what are the symbols of culture? Words are the symbols of culture. In Indian culture, what it has been said, Shabd hi sansar hai. So the kind of words you speak, the kind of words with which you play, they are the indicators of your world and your culture. Your gesture, your picture, or objects that carry a particular meaning, which is only recognized by those who share a particular culture. So new symbols easily develop, old ones disappear. That happens in a culture. So symbols from one particular group are regularly copied by other, and this is why symbols represent the outermost layer of a culture. Similarly, heroes and persons. Rituals are and rituals. You all know rituals are collective activities. And then the core of a culture is formed by values. So through all these forms, what happens that the culture gets manifested. So manifestation of culture is like that. So in short, if you think culture in a way like culture is a learned, culture is shared, culture is a dynamic, culture is a systematic, and culture is a symbolic in at least in 5 dimensions, and that will help you to understand what culture is all about. So in short, I'm not going in detail, but before I specifically talk about how NEP 2020 talks about culture, let me tell you one thing more. The moment we talk about culture of India, or when like the topic say promotion of Indian languages, art and culture, let me confine myself to culture, and then I'll come to NEP 2020 also. When you will ask me, suppose if I get a chance to represent Indian culture in European settings or African settings or Arabian settings or American settings, what am I supposed to do? Should I always talk about what is Indian culture, what is there in the culture? Even if I talk about that, what specific points, suppose only 15 minutes are given to me or 30 minutes are given to me, what kind of things I would like to talk about Indian culture? For me, I would love to talk about the epistemic dimension of Indian culture. When I say epistemic dimension of Indian culture means I'll claim, not only claim, but I'll give an evidence, right, to the world that the most abstract logical system was developed in India by one of the Sardarshanas like Nyaya Darshan. And in this darshana, when the Americans and Europeans say, "Oh, Indian culture, Indian philosophy is nothing but the religious philosophy," I differ completely. So the epistemology is there, the logic is there,
And I have always, wherever I got the chance in my life, that the syllogistic reasoning doesn't match the kind of syllogism India has advocated, particularly the Nyaya epistemic logic has advocated. Similarly, if I'm to ask, okay, what else in addition to logic and reasoning, what else you can claim as the epistemic culture of India? I'll say the symbol of zero. So what is the cultural connotation of zero? I'll give you one small anecdote. I was presenting a paper in University of Riverside, California, and I claimed that I come from the land which has given the birth of the zero, or the concept of the zero to the world. And now we are friends because he also belongs to the mathematics education background, and he objected my statement. He said, no, 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 no. It originated in Arabia, traveled to India, and through India it went to the Europe and America. I said, no. I said, okay, if that's correct, you tell me, in addition to numeric or mathematical connotation of the concept of the zero, what is the cultural connotation of zero? And then he kept quiet. So I asked the chairman, you give me only 10 minutes extra, I'll explain why our claim is more valid and logical than his claim. Because I have asked him a question. Would you suggest the cultural connotation of the concept of zero? So he was very happy. And the chairman said, please explain us. We all would love to listen to you. I said, where? I said, when I was a very small, very young boy, and suppose if I'm playing one hard object or an object which can harm my eyes or lips or nose, because child doesn't understand what happens if I pierce this in my eyes or mouth or this. So my elders used to snatch this sharp object from my hand, and they used to say, sunna, sunna, sunna. I mean, I'm talking in my own language, the Mathli language. So sunna means shunna, gaib ho gaya, sab khatm ho gaya. Nothing is there. So as a child, I used to wonder, kahan gaya wo? So see, even I don't understand the concept of number. My culture was giving me teaching me to learn that zero means nothing. When I started going to this school, what happened? When I started going to this school, people say, oh, there are natural numbers, set of natural number, 1, 2, 3, 4, 5, 6, but they are incomplete system of number. So when you include zero into the set of natural number, it becomes a whole number. So zero means nothing, but that makes the whole as a number system. Now, when I entered in the class of 3rd, 5th, 6th, what my mathematics teacher taught me, zero means nothing. Fine, I accept it. But zero with respect to operation is a very powerful. And without having any power. So we used to wonder, on the one hand, you are saying it doesn't have power. It cannot influence the addition and the subtraction. So a powerless object has so much mean too. 2 minus 0 remained, but 2 into 0 becomes 0. Till date, I don't understand, frankly speaking. We use operations, but why it happens? You divide by 0 to 2, it becomes undefined or infinity. How it happens? See the powerful conceptualization of the cultural connotation of the zero. So these are the numeric and mathematical connotation of the zero. Then I got an opportunity to read a book written by Mani Bhaumik. And the name of the book, I think if you get the chance, please read that. The Code Name God. He's basically a mechanical engineer, but he writes very powerfully in the area of physics. And the last chapter he writes in this book, and I was surprised to read. So physically, he was trying to explain some phenomena. And then all of a sudden, what stuck to me is 0 is infinity and infinity is 0. So I asked the chairman,
Mr. Chairman, you give me permission to speak in my own language, and then I'll explain in English language. He said, please go ahead. I said, Shunya hi ananta hai or ananta hi shunya hai. And that's the cultural connotation of the number 0. It's no, and that's why India can claim. And I think at least 10 mathematicians or 100 mathematicians will take a lifetime to understand this. One of my friends, he is one of the authors of, are not very close friends, but we are well acquainted because we know each other. And I had a chance to interact with him because he has got almost equivalent to Nobel Prize in mathematics, because in mathematics, Nobel Prize is not given, but the field award is given. And I was discussing him that how to prove this mathematically. So, even lifetime is less to prove or disprove this hypothesis. I pray God give me some strength that in future, if I get the opportunity, I would like to prove this. Well, so that's the epistemic dimension of Indian culture, not only the logical dimension of Indian culture. Similarly, the kind of dharma shastras that are there in India, they're the amazing one. Fine, some of the things might not be as good in the modern context. Maybe I agree with that. But see, you read the Manu Smriti, you read the Yagballak Smriti, on which the Hindi law code has been drafted in India, and they are practiced in the court, etc., etc. So I would love to talk about, if I'm asked to represent India and Indian culture and at any forum, I would love to present culture from the perspective of epistemic and the dimension of India, because that's a very, very powerful. Why? Because culture is a soft power also. It's a symbol of soft power also. And abstraction is one of the powerful soft power that India has got. And we are the descendants of those people. Anyway, in the backdrop of this discussion, I would like to talk about the NEP 2020, because chapter 22nd very clearly talks about the promotion of Indian language, arts, and culture. And it states, and I would like to quote from that the India is a treasure trove of culture. This is the phrase that in this document has been used, developed over thousands of years and manifested in the forms of arts, works of literature, customs, traditions, linguistic expressions. See the Sanskrit expression. Like, because Savan is going on, and we celebrate this month in the name of Lord Shiva. And I'll request each one of you, please go to the Mumbai, and whenever you get the chance, go to the Elephanta Cave and see how powerfully the Shiva has been depicted in various forms. Not only Indians, the Shiva's Tandav Nrit has been used by, there is a physicist called Capra, and Fritjof Capra in his book says that the Shiva Tandav is nothing but the symbol of the cosmic Tandava, cosmic dances. Please read that book, The Tao of Physics. You will enjoy that. And you will feel very proud. Oh my God, those who came out with this idea, how the idea of this Tandav Nritya is just so closer to the cosmic dances. So it's this is what it says, that our culture is a result of works of literature, customs, traditions, linguistic expressions, artifacts, heritage sites, and many more. Even the abstract ideas that could not be documented. There are something which is in the form of way of thinking, and even all ways of thinking cannot be documented. This is what I believe. So millions of people from around the world partake in it, enjoy and benefit from this cultural wealth every day.
in the form of visiting India. Many people, all these things. And that's why I sometimes say incredible India, as per Indian tourism slogan. So what is our responsibility as a teacher? Fine, you teach physics, no problem. You teach mechanical engineering, no problem. You teach hydrostatistics, no problem. Hydrodynamics, no problem. You teach computer science, no problem. You teach mathematics, no problem. But you also talk about the culture, at least the abstracted empirical aspects of the culture that is there. So the promotion of Indian arts and culture is important, not only for the nation to be recognized as a soft power, not as the world power, right? But the soft power, but also for the individual. So the cultural awareness and expressions are among the major competencies considered important to develop in children. Like one of the students recently submitted on mathematics education. And luckily, I got the chance to have the Viva Voce, the ethnographic and the cultural dimension of mathematics education. And it's okay, you tell me the cultural dimension of any mathematical concept that you think India can explain much better, or Indian mathematicians can explain much better than any part of the world. So it is through the development of a strong sense and knowledge of your own cultural history, your own arts, languages, and traditions that you can build a positive cultural identity, and more importantly, self-esteem. If you don't belong to a rich culture, studies indicate that people from that culture always project themselves having very, very low self-esteem. So thus, cultural awareness and expression are important contributors both to the individual as well as social well-being. If you ask the cultural theorists, they'll say even the emotional well-being. I remember that for the first time when I entered into the Elephanta cave, and then I was surprised that see how Dutch people destroyed that culture, how powerful that was built, and how could that happen? So, friends, the arts form a major medium for imparting the culture. Like you go to the Khajuraho and don't read anything, just go and observe. I'm damn sure that your interpretation of that will be completely different from the rest of that. Completely different. And you must have your own interpretation of your own culture. I always advocate that. So the arts, besides strengthening cultural identity, awareness, and uplifting societies, are well known to enhance cognitive and creative abilities in individuals and increases individual happiness. I know one professor in education at Osmania University. I met her in 2002, almost 20 years back. And she gave a demonstration that how the performing arts can help an individual, right, to develop or to enhance cognitive and creative abilities. There are some groups, they are working from the psychological point of view, and they claim that the happiness, or you can call the well-being, cognitive development, and cultural identity of individuals are important regions that any culture of all kinds must be offered to the students at all levels of education, starting with early childhood care and education. And of course, for any kind of expressions to others, you all know language is important. So in our tradition, it has been said, शब्द ही संसार है, शब्द ही ब्रह्म है. जैसे शब्दों का आप प्रयोग करते हैं,
उसी तरह की व्यक्तित्व आपके सामने निकल के आता है. So language, of course, is inextricably linked to art and culture. अभी कुछ दिन पहले मैं कहीं था तो दो शब्द आए हमारे सामने, एसोसिएशन एंड यूनियन. हिंदी के कुछ लोग थे, मैंने उनसे पूछा कि अच्छा क्या होगा इसका उपयुक्त शब्द. तो एसोसिएशन के लिए भी संघ और यूनियन के लिए भी संघ. मैंने कहा भाई हमारी भाषा इतनी खोखली नहीं है कि दुनिया के किसी दूसरे भाषा के शब्दों के समकक्ष हमारी भाषा में कोई शब्द ना हो. नहीं है तो बना डालिए. दो शब्दों के लिए, दो अलग के लिए एक ही शब्द का प्रयोग आप क्यों करते हैं? क्योंकि मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है कि जब दो शब्द हैं तो दो अवधारणाएं हैं. एंड दैट्स व्हाई आई एम टोटली अगेंस्ट टू सिमिलर वर्ड्स और समानार्थक पर्यायवाची शब्द और समानार्थक शब्द. नो, देयर इज नथिंग लाइक दैट. So languages influence the way people of a given culture speak with others, including with family members, authority figures, peers, and strangers, and influence the tone of conversation. And that's why always I have advocated, you teach any subject in which you have done your graduation or master, or you feel comfortable, but your communication skills should be stronger. You must have, a teacher must possess a powerful communication skill. And our almost all teachers were very powerful in terms of communications. I have, number of stories about the Indian teachers whose communication skill was so powerful. Well, so the tone, perception of experience, or familiarity inherent in the conversations among speakers of a common language are a reflection and record of a culture. आप तीन तरह की हिंदी को सुनिए. मध्य प्रदेश के लोग किस तरह की हिंदी बोलते हैं, दिल्ली के लोग किस तरह के बोलते हैं, पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोग किस तरह बोलते हैं, पश्चिम जो बिल्कुल हरियाणा और दिल्ली से मिला हुआ है. वहीं हरियाणा के लोगों की हिंदी सुनिए और राजस्थान के, आपको साफ पता चल जाएगा. लैंग्वेज से आप पता कर पाएंगे कि किसके कल्चर में एग्रेशन कितना ज्यादा है, या किस कल्चर में अगर एक लैंग्वेज से पता कर लेंगे कि उसकी सॉफ्टनेस है या नहीं, नजाकत जिसको कहते हैं वो है या नहीं. वही हिंदी लखनऊ में सुनिए, जो ओरिजिनल लखनऊ की बात है, तो आपको पता चल जाएगा. एंड दैट्स व्हाई परहैप्स NEP 2020 chime in again, advocating that there is a need to work for promotion of Indian languages, Indian arts, and Indian culture. अभी एक रिपोर्ट आई, कुछ दिन हो गए, जिसमें बताया कि पिछले 50 वर्षों में केवल भारत में 250 लैंग्वेज लुप्त हो गए. और आज तक आप देखिए कि आप दुनिया की सबसे बड़ी लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री है, यूएनओ डेमोक्रेसी की वकालत करता है, लेकिन आपकी भाषा को रिकॉग्निशन नहीं मिला. क्यों? अगर चाइनीज हो सकता है उनकी भाषा, तो क्यों नहीं इंडिया का कोई लैंग्वेज हो सकता? मैं नहीं कहता हूं केवल हिंदी हो, तमिल ही को रिकॉग्नाइज करते, आप तेलुगु को करते, आप कन्नड़ को करते, आप मलयालम को करते, आप गुजराती को करते, आप मराठी को करते, किसी को तो करते. क्योंकि इन सब का जन्म हिंदी के जन्म होने से बहुत पहले है. और यूनेस्को की अगर आप लैंग्वेज की रिपोर्ट को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि उसने बताया लगभग 200 भाषाएं इंडेंजर्ड है. 250 तो लुप्त हो गई और 200 इंडेंजर्ड के कगार पे है, यानी वो कभी भी लुप्त हो जाएंगी. एक छोटा सा अफ्रीका का कंट्री है जो 250, वो छोटा सा, इंडिया का 1/10 भी नहीं है, वो 250 लैंग्वेजेस में अपने टेक्स्ट बुक को छापता है स्कूल एजुकेशन के लिए. संयोग से मुझे अरुणाचल प्रदेश के NEP इम्प्लीमेंटेशन एडवाइजरी कम कंसल्टेंसी का मौका मिला. तो उन्होंने कहा कि सर हमारे पास इतने लैंग्वेजेस हैं, हम क्या करें. मैंने उनको यही एग्जाम्पल दिया, क्योंकि वहां जितनी ट्राइब्स हैं, हर ट्राइब की अपनी लैंग्वेज है.
हर लैंग्वेज की आदि दूसरे की भाषा नहीं समझता है, तो क्या करें? अरे उसी भाषा में बना दो। क्योंकि मेरा मानना है कि हर भाषा में केवल नॉलेज नहीं है, उसकी अपनी एक संस्कृति भी है। इसलिए भाषा लुप्त होगी तो आपकी संस्कृति लुप्त होगी। उन्हें दुनिया की बात छोड़िए, भारत के जो शेड्यूल्ड लैंग्वेज है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कितने लैंग्वेज, 8 शेड्यूल में ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में हमने लैंग्वेजेस की प्रोविजन किया है, कितने थे? क्यों 18 ही रखे आपने, और ज्यादा क्यों नहीं रखे? और जब बाद में डिमांड हुई, अभी आपको पता है कि वाजपेयी जी की सरकार थी तो उन्होंने मैथिली को उसमें शामिल कर लिया, जबकि मैथिली से ज्यादा बोलने वाले की संख्या भोजपुरी है, लेकिन अब तक नहीं शामिल हुआ। So, in short, NEP 2020 very clearly states that the teaching and learning of Indian languages need to be integrated with the school and higher education at every level. अभी एक वाइस चांसलर के साथ में कहीं था, तो उन्होंने कहा कि जैसे हमने अपने यूनिवर्सिटी में बीटेक हिंदी में शुरुआत कर दी, तो हमने कहा एमटेक को भी ले आई। तो किसी ने कहा कि ये पहली शुरुआत है, मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। पहली आईआईटी में पीएचडी की थीसिस हिंदी में आईआईटी मुंबई में लिखी गई थी, लेकिन नहीं कंटिन्यू हुआ। So for languages to remain relevant and vibrant, there must be a steady stream of high quality learning and pre-materials in these languages, including textbooks, workbooks, videos, plays, poems, novels, magazines, etc. I'm not saying you read NEP 2020, NEP 2020 is saying this. Vocabularies को और उनकी अपनी डिक्शनरीज को कॉन्टिन्यूस अपडेट करने की जरूरत है। अगर ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज लाठीचार शब्द को, नीति के शब्द को, घेराव के शब्द को, प्रदर्शन के शब्द को इंक्लूड करता है, तो हम क्यों ना करें? हमारी दूसरी भाषाएं क्यों ना करें? But yes, NEP 2020 is very clear in its stand that when NEP 2020 is saying that there is a need to promote Indian languages, it also says कि दूसरी भाषाओं को पे भी ध्यान देना है, क्योंकि इंटरैक्शन भी बहुत जरूरी है एक दूसरे भाषा के बीच में। मैं थोड़ी देर पहले आपको एपिस्टेमिक डायमेंशन ऑफ इंडियन कल्चर की बात कर रहा था। आप देखिए कि न्याय लॉजिक के ऊपर दुनिया के, मेरे पास डेटा है, 18 कंट्री काम करता है, लेकिन हमारे पास कोई लॉजिकल इंस्टीट्यूट नहीं है जो केवल लॉजिकल डायमेंशन पे काम करता हो। मेरे एक फ्रेंड है जॉन बेंथम, नीदरलैंड एम्स्टर्डम में उनका इंस्टीट्यूट है, ओनली लॉजिकल डायमेंशन पे काम करते हैं, और उसमें वो न्याय लॉजिक पे काम करते हैं। इसी तरह ऑस्ट्रिया काम करता है, जापान काम करता है, यूएस काम करता है, बहुत सारी कंट्री, जर्मनी काम करता है। हम आज भी संस्कृत टेक्स्ट में जो लिखे हुए हैं न्याय के सूत्र, उन्हीं सूत्र को दोहरा रहे हैं। So to enable the key, a number of further actions will be taken to tandem at the higher education level and beyond. और इसलिए कहा है कि पहला काम जो करना होगा, to develop and teach many of the courses of the type mentioned as we have discussed. An excellent team of teachers and faculty will have to be developed. Strong departments and programs in Indian languages, comparative literature, creative writing, art, music, philosophy, etc., etc. And very clearly it says that the more HEIs and more programs in higher education will use the mother tongue and local languages. You organize any seminar and conferences. Now, see, the ministry says, why we don't do on our own? Instead of simply talking about promoting Indian languages, art, and culture, we can also talk about being a student of mathematics. Can you think of something, the epistemic and logical dimension of Indian culture? Or the being a student of law,
can you think of the art of debating which figures in one of the Sat Darshanas of India? Of course, it can be, but why it is not there in the syllabus? Why it has not been integrated in that? So very clearly, it says that the high quality programs and degrees in translation and interpretation, art and museum administration, archaeology, artifact conservations, graphic design, and web design within the higher education system will also be created. But who will create? Provision, the government and the system may give us the provision, but we will have to do that. So while teaching mathematics, can you trace its cultural connotation in Indian culture? And very clearly, NEP 2020 says that this policy recognizes that the knowledge of the rich diversity of India should be imbibed firsthand by learners. And this would mean including simple activities like touring by students to different parts of the country, which will not only give a boost to tourism, but will also lead to an understanding and appreciation of diversity, appreciation of culture, traditions, and knowledge of different parts of the country. Yeah, some initiatives have been taken, like Ek Bharat, Shresth Bharat, such kind of things you can do. Ek Bharat, Shresth Bharat, let me tell you that NEP 2020 has mentioned that. It will have to expand its translation and interpretation. And not only the dominant languages, but any small language, any kind of literature is available in that particular language, we should translate it. And that's why I'm very happy to note, and you all must have read, that NEP 2020 says that an Indian Institute of Translation and Interpretation, IITI, will be established. And such an institute would provide a truly important services for the country. Like we always say that Sanskrit language is rich. In what sense it is rich? In terms of language, it is a language. As I said, during this Savan month, we celebrate Shiva. And I was comparing the two, Shiva Strotam of Shankaracharya, number on the one hand, and Tulsi Krit on the other. And you will see the differences. Same prayer is there offered to the Lord Shiva, but look at the words arrangement. I was surprised the power that Shankaracharya had. सर एक छोटा सा निवेदन था सर. जी 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 सर, you speak so well in Hindi सर. एक छोटा सा निवेदन था, अगर आप हिंदी में थोड़ा सा सेशन कंटिन्यू करेंगे तो बहुत सुंदर लगेगा सर. बाकी मर्जी आपकी है सर. अच्छा, तो नहीं, तो मुझे किसी ने कहा नहीं कि मुझे हिंदी बोलना है. मुझे लगा कि नहीं, बोलना नहीं है, निवेदन है सर ये. बिकॉज नहीं, आपका निवेदन स्वीकार है. और भारत में अगर हम, और खासकर मध्य प्रदेश के इंदौर में अगर हो रहा है ऑर्गेनाइज और हिंदी में ना बात करें तो कैसे हो सकता है. नहीं, मैं निश्चित रूप से मैं हिंदी में आप बहुत सुंदर चाहूंगा इसके लिए. धन्यवाद. मुझे अगर बता दिया जाता किस भाषा में रखा जाता तो बोलने में मुझे कोई कठिनाई नहीं है और अच्छा भी लगता. थैंक यू वेरी मच. तो उन्होंने कहा है, NEP 2020 ने कहा कि भारत को अपने संस्थानों को, विश्वविद्यालयों को, हर विश्वविद्यालय, क्योंकि आप जानते हैं कि अब मल्टी डिसिप्लिनरी हम होने जा रहे हैं, तो क्लासिकल लैंग्वेजेस और लिटरेचर की पढ़ाई करनी चाहिए. आपको ताज्जुब होगा, ट्रांसलेशन का सबसे अच्छा सॉफ्टवेयर जो मदन मोहन मालवीय के अंदर कई प्रोग्राम थे, उसमें IIT मुंबई ने डेवलप किया है. और मैं हमेशा से कहता रहा कि IIT मुंबई बहुत अच्छा है, IIT दिल्ली बहुत अच्छा है, या IIM इंदौर वन ऑफ द बेस्ट है. तो क्यों नहीं बाकी पढ़ाई भी करे वो, क्योंकि कल्चर ऑलरेडी है, उस फिजाओं में है, अध्ययन और अध्यापन उसकी संस्कृति है, तो दूसरी चीजों को भी लाया जाए. और ये बात मैं नहीं कर, NEP 2020 ने कहा है, और कहा कि पूरे भारत में
आप देखिए संस्कृत के क्या पाव, ठीक है उसका ग्रामर जटिल है, लेकिन जिस तरीके से संक्षिप्त में उस भाषा में कह देने की क्षमता है, मुझे लगता है दुनिया की किसी और भाषा में कह देने की क्षमता है। और कहा है NEP 2020 ने कि क्लासिकल लैंग्वेजेस इंस्टीट्यूट्स को एस्टैब्लिश किया जाएगा और जिसका लक्ष्य होगा कि वो बाद में यूनिवर्सिटीज के साथ मर्ज होकर काम करें। भाषा, देखिए हम ऑरल ट्रेडिशन, श्रुति परंपरा के लोग हैं, ताकत है उसको और हम ताकतवर बनाएं, ताकि हम अगर हार्ड पावर के रूप में, वर्ल्ड पावर के रूप में नहीं, तो हम सॉफ्ट पावर के रूप में पूरी दुनिया में जाने जाएं। जैसे कि आज हम सॉफ्टवेयर में जाने जाते हैं, वहीं से हम एक क्लू ले सकते हैं कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जिस तरीके से भारत जाना जाता है, तो सॉफ्ट पावर के रूप में भी भारत जाना जाए। और कहा है NEP 2020 ने कि नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पाली एस्टैब्लिश किया जाएगा, नेशनल इंस्टीट्यूट, नमस्ते, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पर्सियन किया जाएगा, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर प्राकृत किया जाएगा। तो सिमिलर इनिशिएटिव्स लिए जाने की आवश्यकता है। यहीं पे एक बात और कही गई है कि सभी भाषाओं के लिए कम से कम वो भाषा जो भारत के 8वीं सूची में, 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में है, उसको एकेडमिक्स में शामिल किया जाए। एक दिन मैं मिथिला विश्वविद्यालय के, तो मैथिली आती है तो नहीं आती है, हमने कहा कैसे गाइड करेंगे। कल्पना करिए कि कोई बांग्ला विश्वविद्यालय का वाइस चांसलर हो जिसको बांग्ला ना आता हो, महाराष्ट्र का कोई विश्वविद्यालय है जहां मराठी भाषा में पढ़ाई लिखाई होती है और उसके कुलपति को मराठी ना आता हो। तो इन सब चीजों को का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। ठीक उसी तरीके से उन्होंने कहा कि भारतीय भाषाओं में है, ऐसा नहीं कि बहुत काम हुआ है, लेकिन उसको भारत में जो समस्या है वो है कि चीजें हम करते हैं लेकिन लोगों तक पहुंचाते नहीं है, जिसको कहते हैं कि द प्रॉब्लम ऑफ डिसेमिनेशन ऑफ नॉलेज। तो उससे जूझना होगा कि जो भी करिए वो लोगों तक पहुंचाइए, लोग उसको तक पहुंचे और जाने और समझे। और खासकर जो कंप्यूटर साइंस के लोग इसमें जुड़े होंगे उनके लिए मैं बता दूं कि NEP 2020 ने साफ कहा है कि जितनी भारतीय भाषाएं हैं उन भाषाओं, देखिए भाषा है तो भाषा के ही जरिए आर्ट भी है, कल्चर भी है और नॉलेज भी है। तो उस भाषा से एसोसिएटेड जितनी प्रकार की कलाएं हैं, संस्कृति के ज्ञान है या ज्ञान है अपने आप में, उसको वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म से जोड़ दिया जाएगा, वेब पोर्टल से जोड़ दिया जाए, ताकि हम भी जान सकें कि उसमें क्या है और कैसे नहीं है। क्योंकि मैंने शुरुआत में कहा था कि लगभग 157 या 198 इतना ही के करीब हैं, जो यूनेस्को ने कहा कि पिछले 250 में तो 200 भाषाएं, आपकी 250 भाषाएं लिप्त हो ही गई, अब 200, लगभग 200, 197 या 198 और इंडेंजर्ड की कैटेगरी में आ गई हैं, क्योंकि लुप्त हो जाएंगी। तो कैसे प्रिजर्व किया जाए? क्योंकि मैंने शुरू में कहा था कि शब्द किसी न किसी एक अवधारणा को इंगित करता है। तो इसका मतलब कि किसी भी भाषा में जितने शब्द हैं उतनी अवधारणाएं हैं, तो उसको प्रिजर्व हम कर सकते हैं वीडियोस के माध्यम से, डिक्शनरी के माध्यम से, रिकॉर्डिंग के माध्यम से। ओरल परंपरा में, ओरल ट्रेडिशन में जो चीजें हैं उसको प्रिजर्व करते हुए, इसलिए बड़ा ही कॉम्प्लेक्स काम है। जब सिंपल कह देना कि प्रमोशन ऑफ इंडियन आर्ट, लैंग्वेज एंड कल्चर, अगर इसकी इंट्रिकेसीज को समझा जाए, उस पर काम किया जाए, तो अगले 100 साल में भी हमारी जितनी भाषाएं हैं आज भारत में, उसका 10% अचीव नहीं कर पाएंगे, ये मेरा मानना है। कम से कम 200 वर्ष लगेंगे, क्योंकि हजारों वर्षों तक हमें अपनी संस्कृति से, अपनी भाषा से, अपने संस्कारों से अलग रखा गया। आपने मुझे भी देखा कि मेरी मातृभाषा मैथिली है, हिंदी में सहज हूं, हिंदी में ही पढ़ाई की है, लेकिन दिल्ली विश्वविद्यालय में आने के बाद कहा गया कि नो नो नो, if you want to establish yourself as a good scholar, you must know how to express yourself not only orally but in black and white also in English language.
So I was forced to switch over to that. हाँ, इससे ये हुआ कि अब दोनों भाषाओं में बात कर सकता हूँ, लेकिन आप सोचिए कि कितनी मुश्किल हुई होगी। अगर सहजता के साथ किया होता तो ज्ञान के कुछ और नए आयाम को जोड़ा होता। अगर जोड़ नहीं सकता तो कम से कम समझा तो सकता था, और समझ ही तो सब कुछ है। क्योंकि मेरा मानना है कि जितनी भी भाषाएं हैं, जितनी प्रकार की कलाएं हैं, चाहे डांस के फॉर्म में है, आर्कियोलॉजी के फॉर्म में है, म्यूजियम के फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में, और हमारे विदिन भारत में अगर जो भी सब कल्चर्स हैं, उन सब में स्कॉलरशिप्स है, उस सब में विद्वता है, उस सब में ज्ञान है। तो क्यों ना उसको हायर एजुकेशन सिस्टम के इकोलॉजी के साथ इंटीग्रेट कर लीजिए। मुझे आज भी याद है, एक छोटा सा इनोग्रेट करके अपनी बात समाप्त करता हूं, मैंने 5 मिनट ज्यादा वक्त ले लिया। उन दिनों में हरियाणा में पढ़ाया करता था और ट्रेन से सफर कर रहा था। एक बहुत ही बुजुर्ग, मेरे ख्याल से अलवर के आगे तौसा डिस्ट्रिक्ट के रहे होंगे वो, जयपुर से पहले, और उन्होंने पूछा उन बच्चों से, मेरे सामने कुछ उसी कॉलेज में, एक रेवाड़ी शहर है, उसके कॉलेज में बच्चे जा रहे थे, क्या करते हो? तो उसने कहा कि बीएससी मैथमेटिक्स। का अच्छा बच्चा, हमने तो नहीं पढ़ी है बीएससी मैथमेटिक्स, मैं तो सिर्फ 8वीं पास हूँ, कुछ गणित के सवाल पूछूं? अब देखिए, ये हमारी परंपरा का हिस्सा, हमारे कल्चर का हिस्सा है कि छात्र है तो बुजुर्ग, उसके पास जो ज्ञान है वो बिना मांगे देने को तैयार है। इसको यूं न समझिए कि लोग प्रश्न पूछते हैं, पूछिए ना क्यों पूछते हैं, ये समझने की जरूरत है। और हमारे परंपरा में कोई भी किसी से कुछ भी पूछने लगता है, या कोई भी किसी को कोई सलाह देने लगता है, कितना ओपननेस है। मुझे आज भी याद है, सिंपल मैथमेटिक्स के, न्यूमेरिकल्स के बड़े सिंपल सवाल पूछे उन्होंने, और बीएससी मैथमेटिक्स करने वाला एक भी छात्र जवाब नहीं दे पाया। कुछ प्रश्न के उत्तर मुझे भी नहीं समझ में आया। फिर मैंने उनसे पूछा कि बाबा, ये जो प्रश्न आपने पूछा, इसका क्या उत्तर होगा? तो उन्होंने मान लीजिए कहा कि 35 या 45। तो मैंने पूछा क्यों और कैसे? मतलब उनके पास जो मैथमेटिक्स पजल का खजाना था, वो मुझे नहीं लगता कि आज के बच्चों में। तो आपको नहीं लगता कि ये हमारा कल्चर का पार्ट है, एपिस्टेमिक कल्चर का पार्ट है? एक नए शब्द का मैं आज यूज कर रहा हूं, एपिस्टेमिक कल्चर ऑफ इंडियन ट्रेडिशन। तो उसको प्रिजर्व करने की जरूरत है। तो जो फोकलोर में, जो उन चीजों में है, उसको कैसे सहेजा जाए और कैसे लोगों तक पहुंचाया जाए, मुझे लगता है हाँ, ये काम किया जाना चाहिए। जैसे एक बहुत बड़ा खिलौना का कार्यक्रम हुआ था कि भारतीय संस्कृति में कितने प्रकार के खिलौने हैं, उन तमाम खिलौने का एक म्यूजियम बनाओ। एंड यू ऑल नो, टॉयज केवल खेलने का नहीं है, उसमें बड़ा ही पावरफुल कॉग्निटिव इनहेंसमेंटिंग पावर भी होता है, जो बच्चों को इमेजिनेटिव और क्रिएटिव बनाता है खिलौने को देख के। खैर, माफी चाहूंगा, मैंने 5-7 मिनट ज्यादा लिया, मैं अपनी बात खत्म। 1 या 2 प्रश्न या जिज्ञासा कोई हो तो बहुत संक्षेप में हम कर सकते हैं, और फिर सर कंटिन्यू कर सकते हैं। इफ यू वांट टू स्पीक समथिंग, आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। हम लोगों नहीं, को मुझे लगता है कि आपके दूसरे वक्ता होंगे तो मुझे रुक जाना चाहिए। मुझे कोई अधिकार नहीं है, मुझे बातें बहुत है करने के लिए, लेकिन एनईपी के 2020 की गाइडलाइन में। लेकिन मुझे लगता है कि दूसरे वक्ता के भी समय का ख्याल रखना चाहिए, और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण जो 30 पार्टिसिपेंट्स आपसे जुड़े हैं, उनके भी समय का ख्याल रखना चाहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सर कुछ हमारे साथ जुड़े हैं, वो कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं आपसे, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी डॉक्टर मनीष जोशी, ही वांट टू आस्क समथिंग। सर प्लीज। सर थैंक यू वेरी मच मैम, एंड थैंक यू वेरी मच सर। बहुत ही सुंदर सेशन आपने लिया सर, और बहुत ही सहज तरीके से आपने, मुझे ऐसा लगा कि दिल से ये कार्यक्रम को आपने किया है। हम लोग चूंकि फैकल्टी मेंबर्स हैं सर, आपसे अब एक सलाह छोटी सी चाहते हैं कि वी अंडरस्टैंड कि जरूर से कल्चर को बचाए रखने के लिए हमारे एंड पे हम लोग अब इस समय क्या कर सकते हैं सर? आप कोई सलाह अगर देंगे तो। आपने एग्जांपल्स भी आप कौन सा विषय पढ़ाते हैं मनीष जी? मनीष जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप कौन सा विषय पढ़ाते हैं? प्रबंधन। सर मैं बेसिकली मैं मार्केटिंग मैं विपणन का छात्र हूँ। जी? और
मैनेजमेंट से प्रबंधन, अच्छा, you also try to speak. मैं दे रहा हूँ आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। देखिए, जब हम प्रबंधन की भी बात करते हैं तो इंडियन मॉडल ऑफ मैनेजमेंट, जैसे मुझे याद है गुड़गांव में एक इंस्टीट्यूट है MDI, आपने नाम सुना होगा, मैनेजमेंट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट। तो वहाँ एक मेरे मित्र थे, उनका अचानक से, वो साइकोलॉजी ऑफ मैनेजमेंट पढ़ाते थे, और अचानक से इंडियन साइकोलॉजी में उनका एक्सपीरियंस हो गया, अब रिटायर्ड कर गए। तो किसी कॉन्फ्रेंस में हम मिले और उन्होंने कहा कि डॉक्टर झा, कैन यू कम टू आवर इंस्टीट्यूट टू टॉक टू द मैनेजमेंट पीपल फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ यूजिंग इंडियन सिस्टम ऑफ लॉजिक इन डिसीजन मेकिंग। तो प्रबंधन में जो निर्णय लेने की क्षमता है या निर्णय लेने का जो तरीका है, वो भारतीय तरीका क्या है, और भारत के किन किन टेक्स्ट में इसका आपको मिल सकता है। तो मैं कहता हूं कि मॉडर्न मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आप बात करिए, चाहे मार्केटिंग में है, HR में है, फाइनेंस में है, या आप टूरिज्म में है, क्योंकि मैंने MBA को पढ़ाया हुआ है, आपको बता दूं, और मैं एक पेपर पढ़ाता था, ह्यूमन एथिक्स एंड वैल्यूज इन एजुकेशन। तो उसमें मुझे याद है कि जारा का जो ऑनर है, जारा ने उस समय एक टॉप क्लास के जो रिचेस्ट पर्सन था उसको रिप्लेस किया था। तो मैंने कहा कि बताओ कि ये कंपनी किस एथिकल प्रिंसिपल को या किस लॉजिकल प्रिंसिपल को यूज करता है अपने प्रोडक्ट को वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल प्रोडक्ट बनाने के लिए। तो मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, जारा जो कंपनी है वो अपने किसी भी प्रोडक्ट को 15 दिन से ज्यादा किसी के स्टोर में नहीं रखता है। 16वें दिन चाहे 100 में से 99 ना बिके हो, उसको वापस बुला लेता है, आपको पता हो। तो क्यों ऐसा करता है? इसकी एथिकल डायमेंशन क्या है, इसकी मैनेजरियल डायमेंशन क्या है, इसकी वैल्यू डायमेंशन क्या है? अगर अमेरिका में कोई मैनेजमेंट का ये पढ़ा रहा है, इसी तरह भारत में, क्योंकि डिसीजन मेकिंग में लॉजिक का बहुत इंपॉर्टेंस होता है, तो भारत में भी उन स्रोतों को आपको पढ़ना चाहिए जहां इस तरीके से प्रबंधन किया गया कि बहुत कम समय में, बहुत कम लागत पे बहुत ज्यादा उपयोगी हो सके। मुझे सौभाग्य प्राप्त है कि मैं जब महात्मा गांधी इंटरनेशनल हिंदी यूनिवर्सिटी वर्धा में था, तो मैंने स्कूल ऑफ मैनेजमेंट शुरू किया था और मैं पहला हेड और डीन था। ठीक, इसलिए नहीं, हालांकि कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, 2 बार कोशिश की है MBA डिग्री पूरा करने के लिए, अभी जहां मैं हूँ इग्नू से ही, लेकिन इतनी व्यस्तता रहती है, नहीं कर पाया। आफ्टर एंटरिंग इनटू माय प्रोफेशन, आई वाज ऑलरेडी एसोसिएट प्रोफेसर दैट टाइम, मैंने सोचा चलो एक और पढ़ लेते हैं, लेकिन कभी कोई एडिशनल डिग्री हो ही नहीं पाई मुझसे। जो लोग कर लेते हैं उनको सलाम, बहुत अच्छा करते हैं। तो मैंने कहा कि केवल गांधी के नाम पे तो गांधी मॉडल ऑफ मैनेजमेंट नहीं लेना है, हमारी इंडियन मॉडल ऑफ मैनेजमेंट क्या है। जैसे एक मेरे साथी हैं, वो कहते हैं MBA का मतलब है मारवाड़ी बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। मारवाड़ क्षेत्र के लोग, आप देखिए पूरी दुनिया में, भारत में और भारत के बाहर भी, नहीं, आपको ताज्जुब होगा कि अगर आप 5 बड़े लोगों का नाम लेंगे, चाहे मित्तल का नाम लेंगे या वेदांता ग्रुप का नाम लेंगे या किस डालमिया ग्रुप का नाम लीजिए, जिसका नाम लीजिए, वो सब उसी इलाके का है, राजस्थान। और वो माइग्रेट किए, कैसे मैनेज किया कि वो किया। तो मेरे एक केस स्टडी या एथनोग्राफिक स्टडी फ्रॉम द मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है, जिसको कि क्योंकि हमारा टॉपिक है प्रमोशन ऑफ इंडियन आर्ट एंड कल्चर, कि हमारी संस्कृति में प्रबंधन के क्या क्या कंपोनेंट है, उसको डॉक्यूमेंट करिए। कितना उपयोगी होगा या नहीं होगा वो बाद में हम देख लेंगे, पहले हो तो हमारे पास मॉडल। जैसे मुझे याद है कि मैं अभी जो हेल्थ मिनिस्टर हैं, उस समय शायद वो शिपयार्ड के मिनिस्टर थे, और उन्होंने मोहनजोदारो में जो वाटर मैनेजमेंट था उस सिटी में, उसके प्रबंधन पे PM ने उनको डायरेक्ट किया था कि इस पे काम करो और हम इसको शुरू करें। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, कल ही मैंने पढ़ा कहाँ गंगा है, और नोएडा तक अब वो गंगा के वाटर को लाने के लिए, पाइप डालने के लिए उन्होंने काम शुरू कर दिया है। या पानी का प्रबंधन का हमारे पास क्या प्रिंसिपल्स थे, क्या तरीके थे। इसलिए नहीं कह रहा हूं कि वो अल्टीमेट नॉलेज होगा, नहीं, वो इसलिए कह रहा हूं कि जब जिस कल्चर में जो चीज होती है उससे जोड़ के काम करेंगे तो ज्यादा मीनिंगफुल होगा। फॉर एग्जाम्पल, आप आज देखिए मीडिया में जो हम एडवर्टीजमेंट कहते हैं,
आप मुझसे ज्यादा अच्छा से जानते होंगे एडवर्टाइजमेंट शब्द का अर्थ। एडवर्टाइजमेंट का मतलब ही होता है कि जिस चीज की आपके जीवन में आवश्यकता नहीं है उस आवश्यकता को क्रिएट कर देना ही एडवर्टाइजिंग है। और इसीलिए उसमें हर कंपनी के लिए आज जरूरी है कि एडवर्टाइज करें, और कितनी क्रिएटिविटी आ गई है। मुझे एक बार प्रहलाद कक्कड़ जी से बातचीत करने का मौका मिला मुंबई में। आप जानते हैं कि ये दिल मांगे मोर जो पेप्सी का एड था, उन्होंने ही उसको डायरेक्ट किया था और बनाया था। तो मतलब कितनी क्रिएटिविटी चाहिए कि, इसलिए मुझे तो कई बार लगता है कि एडवर्टाइजमेंट बनाना, वीडियो एडवर्टाइजमेंट खासकर बनाना, फिल्म बनाने से ज्यादा चुनौती काम होता है। कम शब्दों में कम समय में आपको ज्यादा कह देना है। तो मेरा ये कहना था कि वो भारत के संस्कृति में वो कौन कौन सी चीजें हैं। तो एडवर्टाइजमेंट अब क्या होने लगा है, पहले केवल सारी एडवर्टाइजमेंट इंग्लिश में आती थी, हम बड़े अच्छे मानते थे। फिर कहा कि नहीं हिंदी में है। आज आप चले जाइए उड़ीसा तो उड़िया में मिलेगा वही एडवर्टाइजमेंट, आप चले जाइए आसाम सब में मिलेगा। यानी कल्चरल डायमेंशन ऑफ द डिसिप्लिन, यानी जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ाएं उसका कोई ना कोई अपनी संस्कृति से जुड़ा हुआ एनेक्डोट, केस स्टडी, कहानी, किस्से या कम से कम रेफरेंस जरूर आप करें। बस यही मेरा सलाह होगा कम समय के लिए। बाकी कभी मुलाकात होगी तो जरूर बात करेंगे। मोनिका जी, आप मुझे इजाजत देंगी? सर एक दो प्रश्न हैं जो लोगों के हैं, उनके पूछना चाहते हैं वो, तो मैं चाहती हूँ उनके प्रश्नों के अपन उत्तर दे दें। डॉक्टर रूपा शिंदे हैं, उनका एक प्रश्न है, ये ह्यूमैनिटीज से हैं। उनका मानना है, एक मिनट, हाउ कैन द इंटरलिंकिंग ऑफ लैंग्वेज एंड कल्चर बी इम्पार्टेड टू स्टूडेंट्स? देखिए, पहली बात तो बच्चों को ये बताना है, और हमारे संस्कृति में भर्तृहरि से लेके बाकी तमाम लोगों ने कहा है कि शब्द ही संसार है। ठीक है, तो कहो कि देखो भाषा पे तुम्हारी पकड़ होनी चाहिए। जिस भी कैपेसिटी में जहां भी आप काम करेंगे, राइट, वो आपके लिए एक एडेड एडवांटेज के रूप में काम करेगा। तो ये कैसे समझाएंगे? फॉर एग्जाम्पल, मैं हमेशा एक एग्जाम्पल देता हूं। गणित में ग्रीक से निकलता हुआ जब वेस्टर्न में यानी कि यूरोपियन कल्चर में आया तो उसको कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री। और जब उस लैंग्वेज में गोनो शब्द का वो करेंगे आप तो वो साइड कहलाता है। और हिंदी में हमने उसका नाम क्या रखा है? त्रिभुज, नहीं, उससे लेके। लेकिन बेसिकली त्रिकोणमिति है। तो किसी ने मुझसे पूछा था एक बार कि अगर हम त्रिभुजमिति रखते तो क्या रहते, क्यों नहीं त्रिभुजमिति रखा? ये अंग्रेजी में है त्रिकोणोमेट्री, और गोनो शब्द का अर्थ आप देखेंगे तो भुजा से है। तो लिटरल मीनिंग तो त्रिभुजमिति होना चाहिए। ठीक है, तीन भुजाओं से गिरे क्षेत्रों का अध्ययन त्रिकोणोमेट्री कहलाता है। अब देखिए क्या कल्चरल डायमेंशन है अंतर, कैसे आप सिखाएंगे कि भाषा और ज्ञान में कितनी गहरी हो। कि जो भुजा का जो निर्माण है वो इंडिपेंडेंट लाइन के जुड़ने से नहीं है। वो एक ही भुजा अपना एंगल बदल के जब जुड़ता है तो यानी कोण से भुजाओं का निर्माण होता है, क्षेत्रों का निर्माण होता है। इसलिए हमने त्रिकोणमिति कहा है। तो आप ये बता सकते हैं कि देखो कि सटीक अवधारणाओं का अगर हमें किसी को बताना है तो भाषा में ही बोलेंगे, उसके लिए शब्द चाहिए। तो जो भाषा और ज्ञान है वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अगर आपके पास भाषा नहीं है और ज्ञान की गहराई अनंत है तो उसको स्थूल लेवल पे या कंक्रीट लेवल पे आप कभी नहीं ला सकते हैं। तो वहां लाने के लिए आपको दोनों की इंट्रिकेसीज को समझना पड़ेगा, और बिना उसको समझे हुए आप नहीं कर सकते हैं। जैसे मुझे याद है कि मेरे एक मित्र हैं, बहुत सीनियर हैं, प्रोफेसर। तो उन्होंने कहा कि अरविंद पियाजे को पढ़ते हो? मैंने कहा पियाजे को पढ़ाया है। मैंने कहा कैसे पढ़ाया? मैंने कहा अंग्रेजी में पढ़ के। कहा कि ना, पियाजे ने जिस भाषा में लिखा है उस भाषा को समझिए।
तो अब उस भाषा को पढ़ना जरूरी है। तो अगर मुझे अपनी सांस्कृतिक ज्ञान को समझना है तो अपना ज्ञान होना चाहिए। कुछ दिन पहले मैंने न्याय दर्शन की पीएचडी में सेकेंडरी सोर्सेस को पढ़ा है। तो एक है डॉक्टर सर गंगानाथ, 4 वॉल्यूम में उनकी किताब। तो अंग्रेजी में वो शब्द है GALP, तो मैं उसको जल्प ही कहता, गल्प ही कहता रहा, GALP, गल्प। ये डिबेटिंग, आर्ट ऑफ डिबेटिंग का वन मोड है, जबकि वो शुद्ध शब्द है जल्प, गल्प नहीं। अब अगर ओरिजिनल संस्कृत नहीं पढ़ा है और या संस्कृत की हिंदी टेक्स्ट नहीं पढ़ी या उन विद्वानों के साथ में रहे, तो आप जल्प को गल्प समझेंगे और गल्प को जल्प समझेंगे। आपको तो लगेगा कि आप समझते हैं, आप नॉलेजेबल हैं, बेसिकली आप इग्नोरेंट हैं। अगर मैं जल्प समझा होता गल्प की जगह पे, तो उस डिबेटिंग टेक्निक को बेहतर तरीके से अप्लाई किया। थैंक यू। Sir, Dr. Rahul Borade is also Mr. Rahul, you want to ask something? आप कुछ पूछना चाहते हैं सर से? राहुल जी ने तो सिर्फ इतना ही कहा है कि कल्चरल इन्फ्लुएंस टेल्स ए लॉट अबाउट ह्यूमंस। यस, आई डू एग्री। इसलिए मैंने कहा भी था कि कल्चर जो है वो ह्यूमंस और ह्यूमैनिटी का द्योतक है। शुरू में राहुल जी मैंने कहा था कि आप किसी भी प्रांत के 10 व्यक्ति 20 व्यक्ति को इकट्ठा कर लीजिए, खाने की व्यवस्था कीजिए, एक एक प्लेट उनके सामने रख दीजिए, उनके भोजन करने के अंदाज से मैं आपको बता दूंगा कि कौन व्यक्ति किस राज्य का है। तो ये अपना अपना इंटरेस्ट है जी। और कोई सर कुछ और ऐसे आपके लिए हैं कि रिस्पेक्टेड सर, आई रियली लाइक योर सेशन, स्पेशली इन टाइम्स व्हेन पीपल आर मूविंग अवे फ्रॉम द इमोशनल हम लोग करें एक दूसरे की। जितने लोगों ने सराहना की है मेरे वक्तव्य का, मैं उनका आभारी हूँ। और थैंक्स मोनिका जी कि आपने ये मौका दिया, और मेरे मित्र प्रोफेसर राजीव शुक्ला जी जिन्होंने मेरा नाम आपको शायद दिया, उन्होंने मुझे बताया था। तो आप सबका मैं आभारी हूँ। और ऐसे मौके धन्यवाद जी, थैंक यू सो मच। आपसे विदा लेता हूँ। आप सबसे कभी न कभी जरूर मुलाकात होगी। नमस्कार। थैंक यू सो मच सर।